let's begin. So today's agenda, basically, we have seen so many things in the last class, and there is a very huge gap between that. But yesterday class, or maybe the last class, we are dealing with the data frame. So today we will again see the data frame, how it works, how it runs, and well, the next task is to be seen in this lecture will be the descriptive statistics, how descriptive statistics works, like how to get the mean, variance, mode, etc. Okay. And that basically we will dealing with today data frame and descriptive statistics. I'll just move my slide because this is I have already completed, and you can see this all. Details are given in the Canvas platform, so one can work on that. This is the array we have seen the last time. So the data frame we have seen. So in the last class, we have seen the data frame is a list of the variables are added in the data frame, but the equal length. Important is only the we should have the equal length. So if I'm considering 10 students and their height, weight, name, address, so there should be always a equal length. Very important in the scenario of data frame. Then we have seen one example how it runs, and then this is the MCQ. I think we have seen the last time. Okay, some additional information. So I think this example we have seen the last time. This one. So this is we have seen the last time. And we have seen how to get the data and how to fetch any information. Like if we are interested to know first 2 rows and first 3 columns. So this is some command for that. So we will again see step by step a demo regarding the data, and then we'll move to the another functions like how the tails work, how the head works, then what will be dimension, what will be length, what will be n rows and column, string, okay, names. Okay, so I'll stop here first. I'll stop here first, and I will share. I will share that Art Studio screen which we have seen the last time. Are you able to see my Art Studio screen? Go to chat box right now. Okay. So this is the problem we have seen the last time. I have a data frame. I have a data frame which is written in the form of maybe ID, X and Y. Then we have seen dimension, n rows, n column, head, etc. Okay. So that is the we have seen the last time. But today's session we will see how the data frame look like. Okay, so for example, suppose I have a data like this. Suppose I have a data like this, so you can able to see my data frame. Okay, so I have this data frame. Okay, we don't have this ratio wala column. Okay, we don't have this ratio wala column. So I will tell you how to get the ratio wala column. For a being assume that you assume that there is a no ratio column. Okay, so I have this data frame. Okay, suppose this is a very small data. Okay, I have this 6 students name, maybe in a form of data or maybe in a form of matrix. So how the students can enter this data first in Art Studio. Okay, so that we will see how it works. So this is the actual data you have given, and we have to use your R code, and you have to enter those data in the Art Studio. Okay, so that we will see how you can work on. So since I have a few names, I have a variable name, so you can able to see my screen. So
I have considered the COVID data, and I have it selected a different locations. Let's say Dharavi, Dadar, Thane, Dombivli, Kalyan, and Bandra. Okay, so this is the few locations I have selected. So, so I have already mentioned whenever I'm writing any characteristics, I have to always use double quote. Don't forget this, okay? Even single quote or double quote, both will work. So this is the way you can enter the name, and once you enter the name in your console window, you can able to see it is run properly without any error. So you can see the names. So once you type the names, it will give me in double quote all character. That is your basically names. And you can see there is a 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, I have a 6 locations, so that means I have to give the 6 months also. See why I'm telling this 6 months. If you write 5 months in your data frame, you will be not going to. It is like, because to creating a data frame, you must have same length. So that's why I'm taking the same one. So this is a very old data. I have taken one session on how to conduct RStudio for maybe some of my students, and I have created for them. So I have a month's data here, maybe May, April, March. I will randomly select some month. Okay, I will run it this, and since it is characteristics, we have to write always in the form of uh, in a quoted form. Always remember. Then I have here some positive cases, some negative cases. I've just taken the maybe the roughly data, not actual data. So this is the some positive cases. I will run it. Then I have some negative cases, and I have run it. Now since you can see this is a number, so it will be not in code. Whenever it is a character, it will be always in a code. But whenever it is a number, it will always a without code. Now this is the list of variable I have created. Okay, one can directly go to data frame and write in the data frame also. Means in data frame itself you can write like names, this full command. That is also fine, no problem at all. But what happened inside the data frame, if you write a huge things, it become maybe if there is some syntax inside that, then getting the syntax become difficult for you. So that's why you can do it always separate, and once all executed properly, then data frame automatically runs properly. Now we will see how to add the data, means how to merge the data. Okay, now see a few things which is not included in slide, but I am including in my uh, demo. So it is like we are covering as well as PPT as well as in demo. So whenever we have a like coming session, we are conducting like how to create a variable, how to merge the data. So that part again I'm not going to repeat here, because that is already covered here. So you are able to understand how this data frame can be merged. Okay, so one can merge this data using data frame. So data dot frame. So this is the variable name I have given. So COVID Mumbai. So I have given the COVID Mumbai is my variable name, and that COVID Mumbai representing me data dot frame. Now I'm writing this all variable. Now you can see I have not written a quote. Make sure that, because it's a data frame, I have already executed this. Okay, this is the variable. Okay, so I'm not writing in a form of code. Okay, so one can go without code. So run it and see. So we can run either by clicking this run, or you can go control enter if you are using laptop. Okay, so if I just see, this is the I have run the COVID Mumbai, but I want to see whether it is executed properly or not. So just write again COVID Mumbai. So once you type COVID Mumbai, I can able to see here. If you see the console, names, months,
positive, negative, all data with me here. Okay, so this is the one thing. Just let me delete this and okay, okay. But what happened? Suppose now I have given two command to run. One will be simple. Your COVID Mumbai, you can work on that. Very simple. Because जो आपने variable यहाँ पे which variable you are executing, same variable you have to run again, then only you can able to see the in that what are the variables are there. Okay, now I want to see this COVID Mumbai in a form of Excel sheet. Usually we work on Excel sheet. Okay, so to see that variable in Excel sheet, we have to always write the command view COVID Mumbai. View. If you write this, automatically the new page will be open like this. Will be the variable you have. You can able to see. Now, suppose I am interested to get. So now I have created this variable. Now I am knowing about this variable. Correct. Now I am knowing about this variable. So let me delete this one and tap. I can able to run once again. So I have this view, I have executed this view COVID Mumbai, and once you execute this, I'll run it, I'll show you again. So if you execute, I'm just clicking on run button. See, automatically new page will be open here, which is your actual data. So this is the, when you import any Excel data, in this way your data look like, always remember. Okay? So that is the things you always take care. Now, suppose I wanted to see, let's say few data I wanted to know, like I just want information. If we have the like more than 1,000 data and you want to see the little information about the data, click on head of, write your variable name. So this is my variable. Okay. So once you just type few letters, automatically your variable comes here. COVID. So if you see, it is showing me only 6 observations. Since I have only 10 observations, so that's why it is just showing the 10 observations, 6 observations. And if it is more than 6, it will show again 6 observations. So suppose I want to write tell of let's say again COVID. Execute and see. It will show you the last 6 observations. Okay. So since I have here 6 observations, let me add one more observation, suppose here. Okay. So you will be understand what exactly it's showing. Suppose I take Borivali. But I have to write in code because it's character. Let's take Santa. I will execute this. Okay, execute it, run. Just take the again May data, some number here. Hold on. 500. I have here 200 cases. Okay. So I'll execute this. I'll execute this. This one. This one. This one. Okay. So again, you have to execute data frame because I have modified the data frame. Okay. So again, you can work on this. Again, you can view that code. So now you can see. You can able to see here. I have added one more. I can say row, but this is not right way of adding the row. I will tell you because you are executing entire thing once again. Okay, so this is not right way of adding. So initially I'm just telling how to add, but in a few coming session I will tell you how to add rows and columns later on. Okay. Then now this is the command head. So what head actually gives? It gives first. It gives first 6 entry.
of a 6 observation. Okay, so I will run it and see. Now in my data set I have a 7 observation, but what it's showing here, can you see the console window here? If you're able to see the console window, so here I have a 6 variable. Here I have a 6 variable. Okay. Now if I click on tell, can you see it's showing me? It's showing me the last 6 observations. So it is starting from 2. It is starting from 2. It's not audible. Can you hear me? No. I know. Yeah, just a minute. Connectivity. Get properly. You have given ID, number, age of the husband, age of the wife. So this is the data I have given with 10 observations. Here I'm interested to get, I wanted to write the program. Means in examination, how the question will ask you. Okay, this is the data you have given, and they will ask you prepare a data frame. So that means you have to use command data frame. Okay. So before using data frame, you have to enter this variable, or you can work directly in data frame. That is also fine. But initially you just create a variable by using our vector command. Okay, and the data set, data frame का नाम जो देना है आपको D देना है. Please don't use your own variable name. It is mentioned here D. So you have to use the data frame. That means variable data set name, it will be your D. As ID number is N. So here this ID number is not actually ID number. We have to write the program by writing N. So N is equal to this one. Then age of husband is assumed to be X. So X is equal to this. So while entering the program, you have to always use X is equal to this, Y is equal to this. Okay. So always take that one. Then you have to display first row, display last row. So the command is, I have shown you directly how many number of rows and columns. How many number of rows and columns are there? Okay, so which command you're going to use, I don't know. Go to chat box and type. Go to chat box and type which command are you going to use for question D. And call dimension. Okay. Okay. So I can say all are correct. One can go for n rows, one can go by n column, one can go by dimension. All are fine, no problem. Dimension give me directly all, whereas n row and column you have to write 2 times and get it. So both is correct. One can go by dimension, one can go by rows and column. Okay. Display only first 3 rows. Display only first 3 rows. What will be the answer for this? Only first 3 rows, not 6. If you just type head, it will, yeah, correct. First 3 rows, correct. Okay. Okay, I'm getting different answers.
Okay. So I think answer is 1 colon 3 comma. Answer is 1 colon 3 comma. What I feel, because it is not saying third row. Understand? See, understand terminology, understand the questions properly. It is not showing third row. If you're saying third row, then you can write 3 comma. But if you're saying first 3 rows, it is saying first 3 rows. So 1, 2, 3. 3 rows means 1, 2, 3. So you have to write 1 colon 3 comma is correct answer. Okay, good. You can work. See, this is all very, very basic. So such questions will be expected in your internal examination as well as in your theory examination. Basic questions I'm telling you for writing programs and everything. It is not very, very big type question expected, but it is like an all tricky type question. It is not going to be straightforward. Means you will be not get the answer. Means you have to think little bit. And statistics means thinking. Okay, I think statistics means thinking, not just simply write anything. Okay, and similarly you can work on last three and so on. Okay, so you can work on, and you are supposed to write it down on your notebook. Okay, you are supposed to write it down in your notebook and take the peek of that, and I'll hopefully I'll create one link for this. You can upload it. This is the one way of means. See, now it is not possible to approach me to all students. So, but this is the way I can able to create it. Okay. So even this assignment also we are talking about the, if I'm talking about terms of Canvas, you have to submit. Means maybe those students who have reached till assignment, how to get those things in I can say in assignment, means how you work on this assignment. Okay, so I hope you have written this problem first. I hope you have written this problem. Go to chat box, write down, because I have think I have given already 5 minutes. So I just want to proceed. Yeah, so, yeah, correct. Okay, okay, fine. So yeah, you don't take the screenshot of these questions. You are supposed to be write it down in your notebook. That's why I'm showing you on my desktop. Don't take printouts. You are supposed to write it down. See why I'm telling you write it down, because this is not something like other paper. I'm again and again, because until unless you write the program, you will not understand. Okay, you are supposed to be at least take down once, then you will be understand what is the next thing, how you can able to do it. So this is the two questions I have given in assignment. I hope I have given these two questions, so those students have seen that canvas assignment. It is in chapter 2. So this is the two questions I have given in the canvas assignment. So क्या होता है, whenever you reach to canvas, I'll share my screen for Canvas so that you can able to understand better way. So see, this is the Canvas platform. I hope the 90% students did their job better, and still there 10% are left. I don't know what's the problem with that 10%, because I'm sending maybe in 3 days mail to all. I think 2 3 mails are already got them, but they are not responding me. I don't know. Anyways, but I think all students should work. It is beneficial for them. So few students are already completed data structure, and very soon I'm going to complete this data structure chapter, which is uploaded on a site. You can visit to the this Canvas platform, and you can work on this. Now, once you have done quiz, there is one assignment. So I just click on assignment and I'll show you how this assignment works. Okay. So this is exactly the assignment look like. Other students who has not completed still
till quiz, understand how these assignments work, because I'm sure that if you just work on this Canvas platform, you are going to be you can do better, you can do better. Okay, so here the instruction is written very clearly, that here the instruction is written very clearly. What is that instruction? You have to submit this assignment with syntax and output. Okay, so when you perform in Art Studio and maybe in the laptop, jo bhi whatever syntax you'll be write it down, go to your phone and open Word file and copy that syntax in your Word file. Okay, then output format. So once you type all your syntax, means I can say my source window में जितना भी आपने syntax लिखा है पहले उसको कॉपी करो, वर्ड में जाओ, पेस्ट करो. सिमिलरली आउटपुट में जो आपको आएगा कॉपी करो, उसके नीचे पेस्ट करो, because there are two questions. Okay, so if there are two questions, you have to write question 1 their syntax, their output, question 2 their syntax, output. Why I'm saying doc file? Because you have to use doc file format, because I hope the 80% students are having the document file, means word file सबके पास रहेगा, और जिसके पास नहीं है they can just use this I can say WPS करके एक I can say app है. Go to Play Store and just download this WPS. इस WPS में आपको सब मिल जाएगा, even Word, PPT, PDF, everything you will be get. Okay, so one can download this, is very important. And this assignment having 10 marks. Okay, so you have to upload this in the doc file. Remember, doc file means आपको doc file ही use करना है, you can't upload in any other file. Okay, so अभी questions I think is now in front of you. Okay, तो आपने ये सब questions का आंसर लिखा है, तो ये सब questions आप उसमें रन करेंगे. रन करने के बाद कॉपी पेस्ट करके आपका वर्ड फाइल रेडी हो जाएगा. once your word file is ready, you have to just click on here assignment. Can you see on the top? Click on submit assignment. So once you click on submit assignment, so just click on submit assignment. Once I click on submit assignment, you can see down there is an option here, file upload. Can you see on down there is a call file upload? So click on file upload. So once you click on, see there are two way. One will be the Google Doc, means you can save it in your Google Drive. But I don't know if you are familiar with the Google Drive, you can whatever command you're working, you can save it in Google Drive, and you can directly you use the Google Drive and you can upload it. Okay, one way is that, but better, because majority students are using the this mobile phone, so they can upload directly using mobile phone, but better to have save your file in proper folder. तो आप क्या करो मालूम है, आपके मोबाइल में एक फोल्डर बनाओ जिसमें आप केवल RK means RK फाइल सेव करोगे, because this you have to do continuously for all so many assignments, so many this thing. तो आपको एक फाइल R का फोल्डर बनाओ, RK फोल्डर में आपको जितने भी आप असाइनमेंट बनाओगे, फोल्डर बनाओगे, वो सब आप सेव करते जाओ, सो दैट आपको लास्ट में प्रॉब्लम ना हो. और जैसे आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे चूज फाइल, तो आपका एक नया विंडो ओपन होगा, और उस विंडो में से आपने जहाँ पे वो फाइल सेव किया है, मे बी योर फोल्डर, मे बी योर एनी फाइल, आपको वहां से जाके वो फाइल क्या करना है, सिलेक्ट करना है. तो सपोज आई हैव सिलेक्टेड दिस फाइल एंड आई ओपन. जैसे आप ओपन करोगे, if you want to write some comment, you can write or you leave it and just click on submit. तो जैसे आप सबमिट पे क्लिक करोगे, आपका असाइनमेंट सबमिट हो जाएगा. And after that you can access the next notes. You can access the
upcoming notes which is important for you to reading purpose. Okay, because we are basically also using the flip classroom. What is a flip classroom? Where the you will be given all material prior to the lecture. तो आपको लेक्चर्स के पहले सब मटेरियल्स मिल जाएगा और आपको वो लेक्चर्स वो पीपीटी और वीडियोस और जो भी मटेरियल्स आपको दिया आपको एक बार गो थ्रू करना है और फिर जब कभी भी हमारा लेक्चर्स होगा सेशंस होगा you can ask your doubts, you can ask your queries and everything. Means basically we will this is the technique called flip class, but I have given all the materials in Canvas, so this is the way you can submit your assignment. So any other difficulty to anyone? So you can ask, though there is no problem. So I'll mute to all, unmute to all. You can ask question. So I have unmuted to all. If you have any query, you can ask related to how to upload this assignment, because next task is that you have to upload this assignment. Very, very important. Yeah, can you hear me, students? Yes, sir. Yeah. Yes, if you have any difficulty related to how to submit assignment and everything, please ask. सर ये जो असाइनमेंट का क्वेश्चन है उसको पहले सर नोटबुक पे राइट करेंगे उसके बाद अपलोड करेंगे क्या? हाँ, आप क्वेश्चंस भी आप देखो, ये क्वेश्चंस तो आपको फॉरएवर आपके साइट पे रहेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. बेटर है आप क्वेश्चन जैसे आप सोल्यूशन लिखते हो, क्वेश्चन पेपर आपके सामने आया, ठीक है? यस सर. आप क्वेश्चंस लिखते हैं क्या? नहीं लिखते. नहीं. तो जनरली क्या करो, आप पंक्तियां तक क्वेश्चंस भी लिख लो तो आपको आइडिया मिलेगा ना. कभी मान लो अगर आपको पढ़ना है, अगर ऐसे क्वेश्चंस पूछे तो क्वेश्चंस कैसे पूछते हैं आपको भी तो आइडिया होना चाहिए. बेटर है आप लिख लो. गुड सजेशन. तो आप क्वेश्चंस लिख लो, पहले क्वेश्चंस लिख के उसके बाद उसका आंसर्स लिखो एक पेज पे. देन अगर जगह है तो आपको मीन्स कंटिन्यू जा सकते हो. अभी देखो क्या होता है, व्हेन यू राइट द सिंटेक्स, तो अभी क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस में, स्टूडेंट्स के माइंड में अरे कैसे लिखना है, क्या लिखना है. तो आई एम जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन फॉर हाउ टू राइट सिंटेक्स, बिकॉज ऐसे सिंटेक्स सर एक बार बता दो. हाँ, आपको प्रैक्टिकल में ऐसे ही सिंटेक्स आपको लिखने हैं. सो दैट्स व्हाई आई एम जस्ट अ मिनट, आई एम शेयरिंग अदर स्क्रीन. आई थिंक आई रिमूव्ड दैट, बट एनीवेज. ओके, सपोज दिस इज माय फाइल. सपोज ये मेरा क्वेश्चन हो गया और मेरे पास ऐसा कुछ क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखो आपको कैसे लिखना है. अगर क्वेश्चन नंबर 1 है मेरे पास, क्वेश्चन नंबर 1 मेरे पास है, ओके. देखो, तो आपको क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है पहले. नाउ दिस इज द एक्चुअली हाउ टू राइट इन योर नोटबुक. तो पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 डालो, पूरा क्वेश्चन लिख लो. उसके बाद लिखना है सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में आके यहाँ पे आपको अभी देखो दिस S1 इज योर, ये जो S1 है आपका, ये मैंने अपने मन से नहीं दिया हुआ. सर वॉइस प्रॉब्लम, वॉइस ब्रेक हो रहा है. ब्रेक हो रहा है, ग्लिच हो गया. क्या प्रॉब्लम है यार, नेट का कुछ समझ में नहीं आता. ओके, स्टूडियो ओपन होते ही होता है. कभी कभी वो आदमी टेक्नीशियन आके गया था, देख के गया था, लेकिन अब प्रॉब्लम नहीं, ऐसा क्यों हो रहा है बार बार. एनीवेज, अभी भी प्रॉब्लम वैसे ही हो रहा है. सर थोड़ा थोड़ा हो रहा है, आवाज लैग हो रहा है सर. तो आप स्क्रीन देख पा रहे हैं मेरा? यस सर, स्क्रीन दिख रहा है. हाँ, तो स्क्रीन थोड़ा देखिए 5 मिनट, देन देखते हैं, अगर कुछ हुआ तो ऑटोमेटिक वापस हो जाएगा. तो ये जो S1 है ना आपका, ये अपने मन से नहीं लिखना है आपको. दिस इज द वेरिएबल व्हिच इज गिवन इन द प्रॉब्लम. तो ये मैंने अपने मन से नहीं लिखा है. तो प्रॉब्लम में आपको दिया है कि S1 बनाओ, S2 बनाओ और फिर एडिशन, SP इज एडिशन. तो ये एक्चुअली ऐसे आपको सिंटेक्स लिखना है. ये सिंटेक्स हो गया. और जब मैं इसको रन करूंगा, जब मैं इसको एक्चुअल रन करूंगा, तो देखो मेरे को यहाँ पे मेरे को वही वापस रिपीट हुआ है. कैन यू सी, ये मेरे को वापस रिपीट हुआ है. फिर मैं S2 रिपीट करूंगा, फिर वही रिपीट हो रहा है. तो मुझे कंसोल मतलब वो जो मेरा आउटपुट है वो मुझे फिर से नहीं लिखना है. बट SP जब मैं रन करूंगा, SP हियर,
एसपी मुझे बनाना पड़ेगा, बिकॉज आउटपुट में मुझे एसपी एडिशन चाहिए. आर यू गेटिंग मी और नो? So we can't hear you. हियर यू. थोड़ा भी आवाज नहीं आ रहा है. Okay, anyways, just see my screen how it is written. Exactly same way you have to write it down. Exactly same way. Okay. सर कॉपी कौन सा करना है? पुट का कॉपी करके पेस्ट. हाँ, कंसोल विंडो का, कंसोल विंडो का कॉपी करके पेस्ट करना है. सोर्स विंडो एज वेल एज कंसोल विंडो. आपको पहले ये सिंटेक्स लिखना है, ठीक है? दिस इज कॉल्ड सिंटेक्स. सिंटेक्स हो जाएगा तो आपके क्वेश्चंस में जब मैं क्वेश्चंस की बात करूंगा तो क्वेश्चंस मेरा क्या है यहाँ पे, लेट मी शेयर माय दिस स्क्रीन. क्वेश्चंस मेरा क्या है कि S1 बनाना है, S2 बनाना है आपको, और यहाँ पे प्रोग्राम आउटपुट किसका चाहिए मेरे को? SP का. देखो क्वेश्चंस आप अंडरस्टैंड करो फर्स्ट. मेरे को आउटपुट किसका चाहिए? SP का. तो जब कभी भी आउटपुट आप लिखोगे तो आउटपुट में आपका SP का वैल्यू प्रॉपरली होना चाहिए, SN का वैल्यू प्रॉपरली होना चाहिए, SD का वैल्यू प्रॉपरली होना चाहिए, SM का वैल्यू प्रॉपरली होना चाहिए. रेस्ट सिंटेक्स यू आर गोइंग टू राइट डेफिनेटली, बिकॉज उसके सिवा आप ये आउटपुट ले ही नहीं सकते हो. ओके, तो आउटपुट में आपको केवल अभी यहाँ पे कितने क्वेश्चंस दिए? 1 2 3 4. अब यहाँ पे 10 मार्क्स दिया है, मतलब 5 मार्क्स इसके लिए दिया हुआ है, 5 मार्क्स इसके लिए दिया हुआ है, 5 मार्क्स इसके लिए दिया हुआ है. राइट, देखो यहाँ पे मार्क्स भी लिखा हुआ है आपको. Here it is showing marks also, right? So 5 मार्क इसके लिए दिया है, SP के लिए 1 मार्क दिया है, 1 मार्क for this, 1 mark for this, and 1 mark for this, and 1 mark for entire presentation. Okay. Similarly, here you have to create another questions. I hope you are clear with this. सर Yeah. सर पहले इसको पीसी पे परफॉर्म करेंगे ना, हाँ बेटा, पीसी पे उसके बाद परफॉर्म नोटबुक करेंगे. पे लिखेंगे. हाँ, पीसी पे परफॉर्म करें, या फिर क्या करो, पहले आप मैन्युअली आप लिख लो नोटबुक में, रफली लिख लो, और फिर पीसी, क्योंकि क्या मालूम जब पीसी पे बैठोगे तो आपको बहुत सोचना पड़ेगा. राइट, लेकिन अगर आपको लग रहा है कि पहले अगर मैं लिख पा रहा हूं तो आप पहले नोटबुक पे लिख लो. नोटबुक पे लिख के पहले उसको वेरीफाई करो करेक्ट है क्या. राइट इट बाय पेंसिल, और फिर पेंसिल का भी ओके सर. तो भी चलेगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं है. See, the way is that we have to understand the problem, understand the concept. It is not necessary आप पेन ही यूज करो, तो पेन से करोगे कुछ सिंटेक्स होगा तो आपको फिर से रब करना पड़ेगा, है ना. तो बेटर टू राइट पेंसिल एंड अपलोड इट, देयर इज नो प्रॉब्लम. आप केवल पेंसिल से लिखो, ऐसा लिखो कि दिखना चाहिए मुझे. I can able to see that what we have written. That is the things I want to tell you. Is that clear, or anyone having any difficulty to how to submit assignment in Canvas? सर पेस्ट कैसे करना है वो बता दो. Sorry, सर इन प्रीवियस क्वेश्चन, this question. प्रीवियस क्वेश्चन, Which previous questions? that ID number, age of husband in years, age of wife, because there are only 3 rows and first question is write 6 rows only. हाँ, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? कॉलम वाइज. फर्स्ट 6 रोज चाहिए ना बेटा आपको, यस सर. तो हेड यूज करेंगे. तो आपको सिंपली क्या लिखना है कमांड में, प्रोग्राम में क्या लिखना है? सिंपली हेड लिखना है, ठीक है. और अभी आउटपुट में आप देखो बहुत 6 सब 6 के 6 तो लिख नहीं पाओगे आप. प्रॉब्लम. यस सर. हाँ, तो 6 के 6 नहीं लिखना है तो आप 1 2 लिखो, डैश डैश डैश, लास्ट वाला लिखो तो भी चलेगा. ओके. मतलब वैसे भी आप वर्क कर सकते हो अगर आप मैन्युअली कर रहे हो. अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है या आर क्लाउड पे जाके आप कर रहे हो तो आप वैसे भी करेंगे तो भी चलेगा. लेकिन जिसके पास लैपटॉप है उसके लिए बहुत अच्छा फैसिलिटी है कि आपको सीधा यहाँ से कॉपी करना है, वर्ड फाइल में जाना है, सीधा सीधा, मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, मतलब कुछ प्रॉब्लम नहीं है. यहाँ से कॉपी करो, सीधा वर्ड फाइल में पेस्ट करो और वर्ड फाइल ही अपलोड कर दो.
लेकिन जिसके पास लैपटॉप या ये प्रॉब्लम है उसके लिए तो आप भी मतलब आप वैसा कर सकते हैं, आप खुद से नोटबुक पे लिखो, उसका पिक लो और अपलोड करो तो भी चलेगा। नहीं तो मैंने आपको बताया है कि आप वो WPS करके सॉफ्टवेयर है वो डाउनलोड कर लो, उसमें आपको वर्ड फाइल मिलेगा, वर्ड फाइल में आप पेस्ट करके means whichever way you feel better you can go for that, because I feel systematic, if you go to systematic it will be the better for you, and you definitely you'll be learn lot of things, I'm telling you again and again, definitely see बहुत simple चीज करोगे तो कुछ नहीं, you will not learn something new, but if you want to learn new things you have to explore your ideas, you have to explore your, you have to work on that. तो जब तक आप खुद से वर्कआउट नहीं करोगे तब तक नहीं पॉसिबल है कि आप कर पाओगे कुछ नया। ओके, so that is the thing I want to just tell you to everyone. I hope there could not be any problem with that. So, थोड़ा सा आप वर्कआउट करोगे तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिलेगा और हम लोग आगे देख सकते हैं। तो I'll just take few names who has not completed so far their assignment 1. So please complete assignment 1 is like very simple thing, you can just work. I think there is nothing, if you have just attended my lectures you can very easy to get score, you can score 5 marks very easy. Okay, so I can just conclude that 90% students have done well in that grade, even they have completed the assignment. And there are a few students like they are not able to आपको थोड़ा सा मोबाइल फोन पे वर्कआउट करना पड़ेगा, बिकॉज आई हैव नॉट ट्राइड इन मोबाइल फोन, बट आई थिंक इट शुड वर्क ऑन मोबाइल फोन आल्सो। थोड़ा सा जस्ट वर्क करेंगे तो आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है। ओके, एनीवेज so I think 11:15, so I may go for हाँ बोलिए। बोल रहे हैं बच्चे चिल्ला रहे हैं। अच्छा ठीक है, so we'll back to the next task. Let's see, the next task is just trying to click okay, so the next task, let's go for descriptive statistics. Descriptive statistics. So what descriptive statistics, what you have to do in descriptive statistics? So basically सर वो बताया नहीं जिसने हाँ क्या बोले बेटा, क्या चाहिए आपको? I'll work on mobile phone and I will back to you those students having the doubt related to mobile phone, कैसे करना है, because even I have not tried
have not tried in mobile phone, but I worked on. I have seen in the R Cloud how it runs. R Cloud में तो होता है, मतलब मोबाइल फोन में दिख सकता है. And if you want demo, I will show you how to work on demo. So I'll just create one YouTube for how you can work on R Cloud in mobile phone. Yes, sir. Please try, sir. Okay. सर बहुत जन के पास नहीं है लैपटॉप. Yeah, I can हाँ, understand. sir. Yeah, I can Even understand, 80% but people don't have. I can't help out in that scenario. मुझे कोविड की वजह से प्रॉब्लम हो गया बहुत. Yeah, COVID is a big problem, but anyway, we have found a solution for that also. Now we are working on online. That's good, na? Yes sir. Solution मिला. ठीक है. Yes, sir. Anyways, let's see. Descriptive statistics मतलब we are talking about some. Now ये बहुत basics है जो आपने FY level में पढ़ा हुआ है, SY level में पढ़ा हुआ है. वो सब आपने बहुत किया हुआ है. हाँ? So that you can work on that. आपका गलेला बुढ़ा है. Yeah, back to it. So descriptive statistics means it's very basic, like how to get the mean, median, mode, etc., etc. Okay, that's all very simple. तो अगर मैं बोलूँगा कि मेरे पास एक वेरिएबल है x जिसके अंदर सम ऑब्जर्वेशंस है, सम ऑब्जर्वेशंस लेट्स टेक 2, 2 some number 2, 3, 2, 2. I will take some number, maybe roughly number 4, 2, 3, 2, 2, some number. Okay, and now this is the see I am following my PPT. PPT में जितना अभी तक कवर किया है हमने, same thing we are doing with the help of demo. Okay, so suppose I want to sort this observation, I want to sort this x in ascending order. तो देखो जैसे आप short लिखोगे यहाँ पे आपको descriptions मिल जाएगा कि short करना है आपको descending order की ascending order. Okay, so by default क्या होता है, अगर मैं simply short x लिखूंगा, it will give me an ascending order, descending order. Let's check. Can you see 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2 and 3, 3, 3, 5? Okay, but if I write short, just a minute, Limai sir का phone आया है. Just a minute. Let me stop here. बिकेश नहीं आया क्या आज? बिकेश जायसवाल. वही वाला विकेश का कोई नाम क्यों नहीं लिया? अरे जाहिर सी बात, अगर विकेश होता तो अभी तक कुछ प्रॉब्लम ही नहीं होता. सही बोल रहा है, एकदम परफेक्ट करके देता था वो. ऐसा जूनियर 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 डेसिमल पे चलना जूनियर. शिवांशु मिश्रा है ना डाउट क्लियर करने के लिए. मिश्रा जी, ओ मिश्रा जी, क्या बोलती पब्लिक? नाश्ता पानी की. शिवम गोंड आपने हाथ ऊपर किया है, कुछ बोल सकते हो? हाँ शुभम, अरे बाय.
sorry, I unmute to all. Oh, sorry. Yeah. I just see now. Just see. Okay. Now it is working. I think it should work. It is audible. Go to chat box right down. Yeah. Okay. So I'll repeat once again. So x variable मेरे पास यहाँ पे है. अब मुझे उसको short करना है. तो short by default you can write short. Okay. But you want to short by using some other decreasing or increasing. अगर मुझे smaller number to bigger number लिखना है तो by default it is false. But अगर मुझे bigger number to smaller number लिखना है तो आपको लिखना पड़ेगा decreasing is equal to false. Means decreasing is equal to true. Means it is from beginning number will be bigger and the smaller number will be the at last. Okay, so just work on these two, how to sort the data. Then suppose I am interested to get minimum number. Okay, I am interested to get a minimum number. तो minimum number के लिए क्या command रहेगा आपका? Just type min, minimum of किसका x, minimum of x. तो minimum x क्या देगा मुझे? It will give me the minimum number which is 2. If I write max of x, it will give me the maximum number. Okay, it's very simple. और मेरा एक रिक्वेस्ट है सभी स्टूडेंट्स से, जब कभी भी मैं ये प्रोग्राम लिख रहा हूँ तो आप भी आपके नोटबुक में मे बी वेरी रफली वेरी थिंग आप लिखो. क्यों बोल रहा हूँ मैं, हम लोग ये डेमो कर रहे हैं बट फाइल तो मेरे पास ही रहेगा. आई कैन नॉट एबल टू शेयर योर फाइल. Even if I shared, I don't know how many students are going to open that file. That's a big question is there. So better to whatever I'm writing, whatever I'm doing demo on in front of you, you can at least write it down in your notebook. It is going to be helpful for coming lectures. Okay. So those students are writing. It's a very good thing for them to get the practice. Okay. So this is the minimum maximum. जब मेरे पास minimum maximum आ गया है, तो I think I can able to find range. So range is equal to maximum of x minus minimum of x. Okay, run it. देखो जैसे आपने रन किया तो आपको रेंज का वैल्यू नहीं मिला, आपको रेंज का वैल्यू नहीं मिला, बट आपको रेंज का वैल्यू चाहिए तो आप जस्ट टाइप करो रेंज, RANGE. देखो 3 मिला. Why I'm telling, because this is the variable जिसमें मैंने ये स्टोर किया है. But मुझे range का, if I wanted to see the value of range, you have to suppose to write range, then only it will show you me 3. Okay. Then suppose I'm interested to know what are the log value of x. So just type log. It's simple log. Simple log in a sense, not log base e. जब मुझे सिंपली लॉग लिखना है तो मैं लिखूंगा log 10. देखो जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे, I'll show you once again. Once you type log, it will show you the list of log. अपने क्या यूज करना है? Simply log 10 यूज करना है. Log 10 of x वर्क करो, you will be shown the answer 3.03. So this is the value of log base 10. But I am interested to take ln. But ln कमांड नहीं होता अपने पास, हमारे पास log होता है. तो जब कभी भी आप नेचुरल लॉग आपको निकालना है तो आपको यहाँ पे लॉग यूज करना है. थोड़ा सा आप याद रखना पड़ेगा सिंटेक्स आपको. दिस इज योर सिंपल लॉग. आई कैन कॉल सिंपल लॉग. सिंपल लॉग मतलब लॉग बेस टू 10. दिस इज योर नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग. ओके, वर्किंग. So this is your simple log, this is your natural log. You can work on natural log, you can see the comparison की answer same मिल रहा है कि नहीं मिला. तो answer is getting different. मतलब कुछ तो natural base 10 और log 10 में कुछ तो difference है इसके अंदर. तो you can able to find. Okay. Then I have seen how to get the minimum, maximum, range. One can now let's find out mean. देखो मीन निकालना कितना सिंपल होता है. अगर मैं सिंपली मीन ऑफ x लिखूंगा, I will get the mean of x. Can you see? The mean is coming 2 points. I'm sure that those students already done in the R, means already attended the R workshop. For them it is very basic, very basic. But I don't have any options because other students have not joined those course and I have to start from very beginning.
but you will feel very simple for this. So you can go to Canvas and you can see maybe maybe few notes and other things that is also uploaded on site. So you can work on that. Okay. Then we have a mean. Now mean is very simple to opt. Now let's say median of x. So median. So how to get median actually? So मेरे पास ये observations है. So I have these observations in ascending order. So 2, 2, 2, 2, 2, 5 times, 2, 4, and then 3, 3, 5. Okay, I have this observation. So how to find median? 2, 4, 6, 2, 4, 6, 8. 8. So 8 means it's an odd number. Sorry, even number. So whenever it is even number, you have to take midpoints. Okay. So leave from 4 here and 4 here. So this is the average. So you have to take average of these two numbers. If it is odd number, you have to take middle point, which is 2. So even if you take your median, if it is odd, take middle one. If it is even, then you can take average of these two numbers. That will give the median. Means actually I'm telling you how you can work manually and get the idea, but you should know how to get the median, okay, manually, because that is quite important. Then we have a, let's say, mode. Now see, you can see mode is before mode I will tell you length command. तो length भी हमने already देख चुका है. Length मतलब x, length मतलब कितना observations आपके पास है. तो it is 8, right? 8 मतलब even है, even मतलब middle value लेना है. अगर 7 रहेगा तो 7 मतलब you leave 3 observations. If it is 7, suppose for example you have this many numbers and 7 observations, and so 7 means you leave 3 from here, 3 from here, middle value is your median. Okay, this is in the case of odd number, but if it is even number, you take the average of these two numbers. Okay, so that is the important thing you should always know. Now length give us the total number of observation in our study. Okay, so that is the because length का बहुत role होता है. I will tell you the maybe in the coming sessions what are the roles are there. Okay. Now suppose I am interested to get mode. अभी देखो क्या होता है, आपके पास mode, अगर आप mode of x लिखते हो यहाँ पे, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगा? देखो आंसर आएगा न्यूमेरिक, आपको मोड नहीं मिलेगा, मोड का वैल्यू नहीं मिलेगा. तो एक्चुअली मोड क्या है आपका? मोड इज एक्चुअली मोड इज विच इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली नंबर ऑफ, राइट, विच इज 2. मुझे लाना है मोड का आंसर 2. तो मोड आपको डायरेक्टली नहीं मिलता है. You have to, because there is no inbuilt program for mode. There is no inbuilt program for mode. अभी फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बोलता हूँ जस्ट टाइप हेल्प ब्रैकेट में मीन, सॉरी इन कॉमा, सपोज टू राइट इन जस्ट टाइप मीन. तो जैसे आप यहाँ पे लिखोगे आपको साइट में, if you are able to see my screen here, I'm just scrolling more. It is right bottom. राइट बॉटम में आपको एक्चुअली मीन कैसे वर्कआउट होता है वो सब बताएगा. तो मीन ऑफ एक्स, सब कुछ कमांड यहाँ पे रहेगा. ये आपको समझेगा ना, ट्रिमिंग क्या होता है, एनए क्या होता है, ये आपको धीरे धीरे आगे आगे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना आपको समझ में आएगा एक्चुअली ये एनए आरएम क्या होता है, ट्रिमिंग क्या होता है, ये सब स्लोली आप पढ़ेंगे. बट यहाँ पे आप जब ये प्रोसीजर्स यहाँ पे ट्रिमिंग का मतलब क्या होता है आपको दिया है, एनए का मतलब क्या होता है, आपको सब एक्चुअली वन बाय वन सब स्टेप्स यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा. सिमिलरली जब आप हेल्प करके मोड टाइप करोगे यहाँ पे तो आपको मतलब सिंटेक्स मिलेगा. Why I'm showing you this help command? Because sometime you need to know कि if you want to explore more thing ना, you can take always help. Yeah, I'm there with you, but you can take the help of sometime art studio also. So यहाँ पे देखो आपको सब R के बारे में सब description दिया, mode of X, but this is given directly. They have not given more thing, but better to you can utilize this. You can just work on that.
सो लेट्स सी हाउ टू सी द मोड। तो क्या होता है, मोड के लिए आपको एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो फंक्शन कैसे बनाते हैं, आई विल टेल यू। तो मेरे पास मैंने यहाँ पे ऑलरेडी x वेरिएबल दे दिया, ठीक है। तो मुझे x में यूज नहीं कर सकता हूँ, लेट्स से z। तो z में यूज कर रहा हूँ और नाउ मैं फंक्शन, ध्यान से देखना बोर्ड, जस्ट लुक ऑन स्क्रीन वेरी केयरफुली। नाउ फंक्शन ऑफ लेट्स से x मेरा एक फंक्शन है, मतलब आई एम स्टोरिंग whatever command I am going to write with the help of x। तो x मेरा ये है, x मतलब ये फंक्शन, आई एम going to use this data x। तो फंक्शन x में लिख रहा हूँ, ब्रैकेट में यूज करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन करना है और नीचे जाके क्लोज करना है। क्या लिख रहा है यहाँ पे मैं सबसे पहले, अभी अगर आप यूजुअल देखोगे तो आप मोड कैसे निकालते हो, आप चेक करते हो कि सबसे पहले कि आप अगर इसकी बात करोगे, ग्रुप डेटा की बात करोगे, तो ग्रुप डेटा में आप कैसे निकालते हो, टू 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 टू, sorry, it is not visible, so I'm just write it down here. It is 2 2 2, or I may create a table here. So now I have these numbers. I have a number 2 3 5, right? These many numbers I have, correct? Now 2 is repeating 5 times, 3 is repeating 1 time, sorry, 3 is repeating 1 or 2, let me see. 3 is repeating 2 times, sorry. This is 2 times, this is 2 times, and 5 is repeating 1 time. So if I see this table, this is actually table, and based on this you found that 2 is repeating 5 times, most occurring number, that means your mode is 2, okay? तो क्या होता है, कभी भी जब हम लोग यहाँ पे इसकी बात करते हैं, मोड की बात करते हैं, तो आपको टेबल्स बनाने पड़ते हैं। तो उसके लिए कमांड कैसा है आपका, राइट डाउन टैब एंड असाइनमेंट टाइम, असाइनमेंट ऑपरेटर, टेबल ब्रैकेट ऑफ x, means I am just creating first table here. I am just creating first table here. Why creating table? Because मोड में आपको पहले टेबल ड्रॉ करना पड़ता है और उसके बेसिस पे आप टेबल बना के फिर उसमें से चेक करते हैं मैक्सिमम कौन सा है, ओके? और ये जो टेबल हम लोग बनाते हैं इसमें यू मस्ट हैव ऑल इंडिपेंडेंट, मींस एक्चुअली वी आर यूजिंग उसमें कौन सा वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, दैट टू गेट वैल्यू के लिए अपने को यूज करना है कमांड टैब, ब्रैकेट में वो टेबल जो आप ले रहे हैं और उसके अंदर मैक्सिमम कौन सा है। तो जब कभी भी आपको चेक करना है पर्टिकुलर वैल्यू, सपोज मैंने 2 लिया, ओके? तो पहले मैंने फर्स्ट ऑब्जर्वेशन लिया और मैं चेक किया, ओके फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज 2, सेकंड लिया, सेकंड इज थर्ड, तो थर्ड लिया, ओके? फिर नेक्स्ट 2 लिया, तो 2 आई कैन सी इज रिपीटेड ट्वाइस। तो मेरा नेक्स्ट सिंटेक्स क्या करता है, मेरा नेक्स्ट सिंटेक्स चेक करता है कि 2 3 में से अभी तक मैक्सिमम कौन आया है, कौन सा ऑब्जर्वेशन मैक्सिमम आया है मेरा, ओके? तो वो लाने के लिए मुझे ये कमांड यूज करना पड़ेगा, व्हिच इज टैब। सो इट इज IND मतलब इंडिपेंडेंट मतलब you're checking those observation independently, 2 को लिया इंडिपेंडेंट, 3 को लिया इंडिपेंडेंट, 4 को लिया इंडिपेंडेंट। सो टैब इट इज चेकिंग द मैक्सिमम वैल्यू इन दिस टैब, मतलब टेबल में वो चेक करे कि मैक्सिमम कौन सा है, और चेक करके देखो ये ब्रैकेट्स प्रॉपर्ली फिट करो आप, ये मेरा ब्रैकेटेड ब्रैकेट्स है, ये मेरा क्लोज ब्रैकेट है, ओके? देन आई हैव टू यूज अनदर वन। एक बार ये हो गया आपका, तो क्या होता है, मोड कभी भी न्यूमेरिक वैल्यूज का हमको लेना पड़ता है, ओके? तो न्यूमेरिक वैल्यूज का लेने के लिए अपने को कमांड लिखना पड़ेगा as dot numeric, as dot numeric, ब्रैकेट में names, in that bracket independent, means IND, means this
independent variable. So you can use properly those brackets. So 1 2 open किया, 3 open किया. So if I use 3, but 3 करने की जरूरत नहीं, आपको 2 यूज करना है यहाँ पे, क्योंकि 1 for this big one, 1 for independent. Okay. Then, so what this actually numeric does here, numeric value is generally for observations. So if I'm using any observations, it will check whether this value is actually a numeric or not. तो एक बार न्यूमेरिक है कि नहीं वो चेक करके उसके बाद वो वैल्यू असाइन करेगा. ओके, वो वैल्यू डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड, डायरेक्टली यू कैन नॉट फाइंड मोड. दैट्स द थिंग. एंड देन यू गो फॉर रिटर्न. मतलब एक वैल्यू लेकर एक वैल्यू लेगा, चेक करेगा, मीन इट विल एग्जीक्यूट फर्स्ट वन, टेबल में जाएगा, फर्स्ट वैल्यू लेगा, चेक करेगा, सेकेंड ऑब्जर्वेशन लेगा, फिर चेक करेगा कि वो मैक्सिमम है कि नहीं. मैक्सिमम है तो वो चेक करेगा न्यूमेरिक है क्या, एंड अगेन that means it will continue return to the observation. So return to m, and then this you have to execute. Okay, so this is the function I have created in mode. तो देखो जैसे आपने क्रिएट किया, कुछ सिंटेक्स नहीं आया, बट लेकिन मोड का वैल्यू नहीं मिला आपको, राइट. तो मोड के वैल्यू के लिए आपने यहाँ पे कमांड लिया था ना, व्हाट इज दैट कमांड, मोड ऑफ एक्स. तो अब ये कमांड यूज करो आप. तो आपको मोड यूज करना है, तो मोड ऑफ, तो जस्ट टाइप मोड ऑफ z. why z? Z or x. I'm storing this function on x. X. Let's say it works on. Let me see. It's again showing numeric. Achha. Just type z. Z is a function. Let me check. Z is a function I have used. X. Right, Z is equal to mod of X. It's the result in numeric only showing. The program is right. Suppose I use another option, mode. Let me check that is it working or not. Oh, just a minute. Yeah, it's showing more. Okay. So if I write this as a maybe some other name, let's say name, maybe a name. If I write here name of X, is it what? Just I'm checking. The name is not found. Yeah, it's shown. Okay. Okay. So what actually you have to do here? This is the mode function, right? So I may write here mode also. Why I'm saying it is a variable. I'm created a variable here, which variable I have stored in the form of function. Okay. तो अगर मुझे वो फंक्शन को रन करना है तो मुझे वो वेरिएबल लेना पड़ेगा. तो वेरिएबल मेरा क्या है? लेट्स कॉल इट दिस इज मोड. अगर इसको मैं मोड ही बोल देता हूँ सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप मोड भी बोलो. इवन आई हैव एग्जीक्यूटेड इन टर्म्स ऑफ नेम आल्सो.
तो आप जो भी आपको नाम देना आप नाम दो डायरेक्टली तो भी चलेगा। तो इफ आई राइट मोड और इसको मैं एग्जीक्यूट करूंगा, पहले एक्सिक्यूट करके आई एम नॉट गोइंग टू राइट दिस वन अगेन, जस्ट टाइप हियर मोड ऑफ एक्स। देखो क्या आता है आंसर, कैन यू सी आंसर इज कमिंग टू। अभी ये मोड को मैं z में स्टोर कर सकता हूँ, मीन्स आई कैन एबल टू राइट इन z में स्टोर करके फिर मैं z टाइप करूंगा तो भी चलेगा, आंसर सेम मिलेगा। मेरा बोलने का मतलब क्या है, ये जो फंक्शन मैंने बनाया है ये फंक्शन मैंने मोड में सेव किया हुआ। तो once I have saved that function in x in mode, उसको अगर मोड को जानना है मुझे तो मैं मोड लिखूंगा, मतलब है जो मेरा वेरिएबल रहेगा o ब्रैकेट में दिस x मतलब ये फंक्शन, जो फंक्शन मेरा है o, okay, so that will give us the command for mode. Okay, I have few things remaining, so let me finish this, then I will come to the DAO session. Okay, this is regarding mode. Then we have here yeah, I can use print x also. You can just run this and you can just find out this one also. Just type print mode x, mode of x. It will make the same output, I think. Yeah, see, you can use print option. That is fine. Then suppose I am interested to know about some called summary. What is summary? Summary of x. Summary of x basically give us the all information about your data, like what is the minimum value, what is the first quartile, what is the median, what is the mean, what is the third quartile, what is the maximum. So this is the quite useful. Why it is I'm telling, because it will give me the some idea about my data. Means what is my middle value, what is my minimum value, what is my maximum value. It's summarizing, actually summarizing the data. It summarizes the data. Summary means it's a 1, 2, 3, 4, 5, 6. It's a summary means it gives a, maybe you have studied summary like what do you called box plot. If you have remember in FYBSC, maybe you are using the box plot. Box plot it is a 5 summary data. 5 means we need maximum, minimum, more. Here by default mean bhi diya hai inhone, but mean is not actually summarizing the data because here I can conclude mean is also part included in the summary. But generally to create a box plot we need this all: mean, first quartile, third quartile, median. Median is a second quartile, and maximum, minimum. So that's why summary is also very good command for checking the data. Then you know how to get standard deviation. Getting standard deviation is very difficult in all the cases. So even we have seen the calculator, it is taking time, but getting in RStudio, it's very simple. For just type sqrt. Sqrt means it's a square root command, right? अगर मैं देखो पहले मैं square root निकाल सकता हूँ और I just want a square root of any number. Let's say sqrt of let's say 100. अगर मुझे square root of 100 निकालना तो आंसर क्या मिलेगा मुझे 10, right? So sqrt gives us the square root of any number. अभी मैं sqrt क्यों कमांड आपको बताया, क्योंकि मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन में क्या होता है, क्या फॉर्मूला स्टैंडर्ड डेविएशन का, इट्स अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस। अभी मेरे पास ना कमांड मेरे इसमें व्हाट यू कॉल्ड RStudio में ना डायरेक्टली ये नहीं है, क्या बोलते हैं, डायरेक्टली फंक्शन नहीं है स्टैंडर्ड डेविएशंस का। तो फॉर दैट पर्पस आई हैव टू यूज द कमांड फॉर sqrt ब्रैकेट में वेरिएंस ऑफ x। देखो अभी separately one can find variance of x, आप separately you can find and then you can use sqrt of that variance and you can run it. आपको आंसर सेम मिलेगा। I will show you both. देखो आपको आंसर्स नहीं मिला, you are not get the answer. Why? Because you have stored that sqrt in sd, but you want to see the answer sd, s.d. Run it. See the answer 1.0.6. But this program can be run in different way also. मैं बोलता हूँ, I am just saying
z1 इज इक्वल टू, मैं बोलता हूँ वेरिएंस ऑफ x। पहले मैं क्या करता हूँ, मैं वेरिएंस ऑफ x को z1 में स्टोर कर लेता हूँ और मैं बोलता हूँ अभी sd इज इक्वल टू sqrt of z1। this is also correct, this is also correct, you will get the same answer 1.0.6. see, this is the why I'm telling you in both the ways. If you are well expert, you can go with this, but if you are little bit, you are not much familiar with RStudio or R programming, go sequentially, matlab aap manually how you are performing. Manually you go like you are finding first variance, you find then you take a square root, you get the standard deviation. Perform exactly same as you perform in the usual calculation. So these things you can work on that. Now suppose you are interested to find CV. What is CV? It's a coefficient of variation, right? Coefficient of variation. How to calculate coefficient of variation? Go to chat box, write down. What's the formula? It is variance, sorry, standard deviation upon x bar, right? Go to chat box, write down what is the covariance formula, coefficient of variation. It is standard deviation upon mean, right? So mean of x. Now write on CV. So I can say my answer is coming 0.4, means 40% of my data is explained properly, otherwise rest data is not explained. So coefficient of variation हम लोग कभी use करते हैं when you want to compare two sets. अगर मेरे पास दो colleges है and I want to check whether which colleges are better in terms of teaching, in terms of giving infrastructure, giving so many things, okay? So O scenario में have to use coefficient of variation. Okay, that is all basically today we are going to deal with this all. See, there is so many things are there, maybe you can work on that. So I think these many things we have seen in my slide. So let me check it, is anything is remaining in my slide so that I can proceed with that. So we have seen so many command. Head, tail, dimension, number of rows. देखो, we have seen SQRT, mean, median, summary, variance. See, variances I have given separate, but can work on variance. Then correlation. अच्छा, correlation हम लोग देख लेते हैं. Then sorting data. Correlation के लिए we will have a separate session because in regression we have already that whole concept of correlation. But correlation also you can work. Minimum, maximum, log, repetition we have already seen. Repetition, sequencing, both are we have already seen in the first session. Then we have a tab, means you can mode function. Then the last one, which we are missing. Okay, so I'll unmute. If you have any query, you can ask or you can put on chat box. Both you can work. So chat is discussion. I think chat window is open for all. You can ask any questions if you have. Yeah, anyone? Or you can put on the chat box. No problem. So I think we are on time. 11:50. I have completed the things. प्लीज सर यूट्यूब लिंक एक बार और सेंड कर दीजिए. Sorry. सर यूट्यूब लिंक सर जो आपने फ्राइडे को किया था सर प्राइवेट दिखा रहा था तो मेरा हुआ.
कि एक एक बार बार और अगर सेंड कर आप दीजिए आप उसको एक बार सब्सक्राइब कर लिंक सर दोगे ना यूट्यूब। बेटा, तो ना बार बार जब कभी भी कुछ अपलोड होगा ना यूट्यूब, तो आपको डायरेक्टली उसका ये आ जाएगा। बट आई एम जस्ट सर आपने फ्राइडे को सर आपने फ्राइडे को सेंड किया था सर, तो मैं कर रहा था, प्राइवेट बता रहा था सर। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अभी वो प्राइवेट नहीं बताएगी, उसको मैंने ओपन रखा है अभी। एनीवेज आपको मिल जाएगा अभी कुछ सेकंड में। So by the time you can see the if you have any students having any difficulty, they can ask question. So means everybody clear, I think, right? Okay, so I'm just sharing another screen for writing questions. You can take down one question for practice based on current, like obtaining mean and variance. I hope it is visible now. Take down this question. Question number 3. Those students having they don't have any doubt, or maybe having doubt, you can ask, or other students can write down. Means all students should write down these questions, and they have to perform these questions. Question number 3. So let me see the chat box if you have any questions. Definitely I'll work on phone, and I will create one video how you can work on R Cloud, maybe within few days. I can't see any questions here today. I think it's all preliminary thing. It's very basic things we have seen today. So that's why students do not have any doubt. But anyways, whenever well, just sharing in 2 minutes that form. अच्छा, बाय द वे हो ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जिसने वो कल का कोर्सेरा का फॉर्म भरा नहीं अभी तक? कोर्सेरा का लास्ट टाइम मैंने दिया था आपको, मे बी द लास्ट क्लास। आई हैव गिवन द लिंक फॉर दैट। ऐसा कोई स्टूडेंट्स है जो आज लेक्चर बैठा लेकिन कोर्सेरा का फॉर्म भरा नहीं है? प्लीज फिल इट, बिकॉज़ एक बार वो हेलो सर, मैंने आज भरा, अभी भर दिया था। आज सुबह भरा था सर कोर्सेरा का। फॉर्म भर दिया है ना बेटा आपने? हाँ सर, हाँ आज ही भरा सर। मेरा उसमें वो आपने जीमेल आईडी का पूरा ये फॉर्म भेजा था ना, उसमें नहीं था मेरा आईडी, तो मैंने अभी लिंक पे से जाके भरा, फ्रेंड से लेके। आपने फिल कर दिया ना? हाँ, इम्पोर्टेंट वही है, फिल करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हाँ सर, क्या हाँ है? किया। हाँ, गुड गुड गुड। तो ऐसा कोई स्टूडेंट्स नहीं है ना कि अपने ओके पास सर। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे है सर उन्होंने फॉर्म भरा नहीं है? बिकॉज आई कैन सर सी ओनली सर मैंने 52 सर हाँ बोलिए बोलिए। मैंने जून में रजिस्टर किया था। हाँ जून बेटा, में मैंने रजिस्टर किया था। जून में। हाँ तो सर मतलब मैंने जून में रजिस्टर किया था। मेरे पास वो आरजे कॉलेज का डैशबोर्ड में दिख भी रहा है, पर मेरा नाम आपके वो ईमेल वाली लिस्ट में नहीं है। बेटा आपने फॉर्म भरा था क्या? लेकिन
आप मैंने अभी ग्रुप हाँ में सर, ना, फॉर्म भर के ही मुझे एक्सेस मिला है। नहीं, मैंने अभी एक्चुअली सर का फॉर्म भरना है रोशन। मैं एक अच्छा दिन ठीक है, मतलब सर आपका जो फॉर्म है वो भी भर दूं? वो फॉर्म भरेंगे तो ही हमको मालूम पड़ेगा ना बेटा आपका कोर्स कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है। अगर आपका कोर्स कंप्लीट हुआ अच्छा ठीक है है सर। उसमें एस लिखो, और वहां पे जाके आप ये करो, क्या बोलते हैं, कौन सर्टिफिकेट कौन सा है, क्या नाम है, वो आप डालो वहां पे जाके। फिर अपने को आइडिया नहीं मिलेगा ना बेटा, समझ रहे हैं आप? हाँ सर, हाँ सर। ओके। I hope you have written the questions. So these questions you have to work on book and और बाकी कैनवास का जो दो क्वेश्चंस है कैनवास का, आपको वो वर्कआउट करना है और वर्कआउट करके आपको अपलोड करना है. ओके, so you can just work on that. ओके सर। I'm just giving that YouTube link also today. Sure. Problem with that. Today is 17, na? Just a minute. Now you will get the link of that. 2 मिनट के अंदर शेयर. दिस इज द 14th अगस्त का लेक्चर्स का मैंने आई थिंक एक ही ये डाला हुआ है. हाँ, एक ही किया हुआ है. क्या बोलते हैं उसको, अपलोड किया है. चैट विंडो आ जाता. कैन यू सी दैट? just see that that YouTube link is working. अच्छा, YouTube link जरा देखो आप वर्क कर रहा है क्या? Just check it. हाँ सर, उसी दिन हो गया था। अभी हो रहा है क्या देखो पहले, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स का नहीं हो रहा था लास्ट टाइम. जस्ट चेक करो. हो रहा है सर। तो आप क्या करो मालूम है, आपको बार बार लिंक भेजने की हाँ जरूरत सर, नहीं हो है. गया, सब्सक्राइब कर दिया। जैसे आप एक बार सब्सक्राइब कर दोगे ना तो आपको बेल मेरा आइकन भी प्रेस कर। नहीं वो जरूरत नहीं है बेल आइकन करने के लिए. केवल आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो जो नए वीडियोस रहेंगे ना आपको एटलीस्ट मेरा या जय सर का कम से कम वो आपको मिल जाएगा. समझ रहे हैं आप? ओके ओके सर। तो 1 मिनट के अंदर मैं फीडबैक फॉर्म भी भेज रहा हूँ. फीडबैक फॉर्म 1 मिनट के अंदर भेजा, 1 मिनट के अंदर. जस्ट इनको ना कभी कभी नेट वाले कुछ तकलीफ हो जाता है तो वो लोग चालू ही नहीं करते हैं.
सॉरी, ये चालू हो गया है सब। सर फीडबैक फॉर्म। सर फीडबैक फॉर्म। जस्ट 1 minute, 1 minute, जस्ट 1 minute। बीकेएस होता तो कब का मांग लेता। बीकेएस मांगता नहीं भाई, वो खुद ही बना देता। सर आज विकेश नहीं आया जो पहले मांगता था फॉर्म। ऐसा है क्या? किधर विकेश कहाँ Yes, गया है sir. फिर? सर वो लड़का नहीं आया। आज लेक्चर ही नहीं बैठा सर वो आज। लेक्चर नहीं बैठा? यस सर। क्या मतलब कहीं घूमने गया है क्या? विजय वर्मा सही बोल रहा है। हाँ? हाँ सर लॉकडाउन में गया था वो। घूमने जाएंगे तो पढ़ाई लॉकडाउन में भी गाँव का करेंगे। मजा ले रहा है। हाँ? सर पंकज सर बीकेएस होता तो 11:30 बजे मांग लेता फीडबैक फॉर्म। ऐसा है क्या?